बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अज़ीज़ तलबा। आज हम पोइम स्टॉपिंग बाय वर्ड्स ऑन अ स्नो इवनिंग जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी हुई है, इंग्लिश की 9th क्लास में दी गई है। उसके हम स्टैंजास की पैराफ्रेजिंग करेंगे। तो चलते हैं पहले स्टैंजा की तरफ। Whose woods these are, I think I know. His house in the village, though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. The paraphrasing of this stanza is: I know the owner of these woods, who is in a house in the village at the time of my visit in the woods. Therefore, I imagine that the owner will not see me stopping here to watch his woods that has become full of snow. The second stanza of this poem is: My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. The paraphrasing of this stanza is: My horse thinks it strange to stop between the woods and the frozen lake because there is no farmhouse nearby. It happens to be the darkest evening of the year. तो अजीज़ तलबा, ये स्टैंजा की जो पैराफ्रेजिंग है ये आपके लिए बहुत मुआवन और मददगार साबित होंगी, स्पेशली फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अल्लाह हाफिज़।